Hello students, welcome back to the class of psychology. So let's continue our chapter number 7, that is the human memory. So in earlier modules we studied about the different types of memories like short-term sensory memory, short-term memory, like long-term memory, and different and various classifications of sensory short-term memory and long-term memory. And we studied the models of memory, okay, that how memory works and मेमोरी का प्रोसेस कैसे होता है. ओके, व्हेन सो स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द मेमोरी, सो हियर इज़ अनदर थिंग विच इज़ रिलेटेड टू मेमोरी, इट इज़ अ फॉरगेटिंग. क्योंकि जब हम कुछ याद करते हैं मेमोरी में तो ऐसा होता है कि हम कुछ भूल भी जाते हैं. ओके, सो the another important thing which is very important and a very fascinating field also, just like the memory, is the forgetting, that why we forget the things. Okay, so let's continue with this topic, that nature and causes of forgetting. So students, the first very systematic attempt conducted on the forgetting by Mr. हरमन एबिंगहॉस. ओके, हरमन एबिंगहॉस जो थे, उन्होंने सबसे पहले जितने भी forgetting के ऊपर हम कह सकते हैं जो भी स्टडीज़ हुई थी वो हरमन एबिंगहॉस ने ही की थी. ओके, बिकॉज देयर इज सर्टन काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड ऑल्सो, दैट व्हाई डू वी फॉरगेट. इज इट बिकॉज द इंफॉर्मेशन वी कमिट टू आर लॉन्ग टर्म memory is somehow lost, or is it because if we did not memorize it well enough? So there are many questions in your mind also. So just like हमारी तरह ही हरमन एबिंगहॉस के माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे और उन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिक वे में इसकी स्टडी की थी. ओके, सो व्हाट ही डन दैट, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स या हम कह सकते हैं जो स्टडीज़ की थी उन्होंने खुद के ऊपर. Okay, he conducted all studies on himself only. So he memorized list of nonsense syllables like CVC trigrams जो होते हैं. सबसे पहले उन्होंने CVC trigrams such as NOK और SEP, ठीक है, तो they are consonant, vowel, consonant, ठीक है. इस तरह से उन्होंने कुछ ट्राईग्राम्स बनाए और उनके कुछ नॉनसेंस सिलेबल्स के, ठीक है, जिनका कि कोई मीनिंग नहीं निकलता है. नॉनसेंस में जिनके कोई मीनिंग नहीं निकलता है, उनके उन्होंने कुछ ट्राईग्राम्स बनाए और उन्होंने लर्न किए. आफ्टर दैन व्हेन ही memorized these kind of list with the CVC trigrams labels, he measured the number of trials कि when we recall these list, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जब उन्होंने खुद के ऊपर कंडक्ट किए थे तो व्हेन ही ट्राई टू रिकॉल ऑल दीज लिस्ट, हाउ मैनी ट्रायल्स ही टुक एट दैट टाइम. तो उन्होंने ये जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है इनको मेज़र किया एंड देन ही फाउंड एंड ही ऑब्जर्व्ड दैट देयर इज़ अ सर्टेन course of forgetting that follows a certain pattern. ठीक है, there is a forgetting follows a certain pattern. अब pattern क्या होता है इसके अंदर कि पैटर्न क्या होता है इसके अंदर कि जो स्टार्टिंग में द रेट ऑफ forgetting इज़ मैक्सिमम in the first 9 hours, okay, and particularly during the first hour, okay, and after that the rate slows down and not much is forgotten even after many days. So in according to Ebbinghaus, in starting time we quickly, our memory get quickly decay, okay, and but after a duration of time, a particular duration of time, the rate of forgetting gets slowed down and we do not forget much things for many days. ओके, सो इन सारे उनसे हमें पता चलता है कि जो मेमोरी होती है वो एक स्टार्टिंग में बहुत शार्प ड्रॉप होता है मेमोरी में, लेकिन धीरे धीरे वो ग्रेजुअल हो जाता है और फिर वो कुछ टाइम तक स्टे रहती है, ठीक है, एक कांस्टेंट फिगर पर रहती है. तो इट मीन्स जो फॉरगेटिंग जो होती है इट फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न. ओके, now there is many theories related to forgetting also, कि why we forget the things. So the first theory is forgetting due to the trace decay. Okay, so trace decay theory is also known as disuse theory. So ये forgetting की theory है. So the assumption is for trace decay theory is that memory leads to modification in central nervous system which is akin to physical changes in the brain called memory traces. Okay, whatever the changes comes into our mind during the modification of the memory in the CNS is in our brain,
So it is called the memory traces. And due to the trace decay, when we हम लोग जब long time तक, if these memory traces are not used for a long time, they simply fade away and become unavailable for us, and we cannot retrieve or we cannot recall those memories. So this theory proves that forgetting takes place because memory trace decay due to the disuse. And then people who go to अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो ये भी अराइज होता है कि जो लोग सो जाते हैं उसके बाद, ओके, कि मीन टू से देन व्हेन पीपल गो टू द स्लीप आफ्टर मेमोराइजिंग शुड फॉरगेट मोर कंपेयर टू दोज हु रिमेन अवेक. सो sometime it happens कि there is no way in which memory traces can be put to use during sleeps. So जो results थे इस टाइप के studies के वो बिल्कुल opposites थे. So those who remain awake after memorizing waking condition show greater forgetting than those who sleep in sleeping condition. So because of trace decay theory did not explain forgetting adequately, कि जब हम सो जाते हैं उसके बाद हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं, और अगर हम कुछ काम में बिज़ी रहते हैं तो फॉरगेटिंग बहुत जल्दी होती है. ठीक है, तो इट मीन्स ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी हमारी चीज़ों को. तो यहाँ पे एक अनदर जो थ्योरी थी, इट टेक्स प्लेस, दैट इज़ द फॉरगेटिंग ड्यू टू द इंटरफेरेंस of what, कि if forgetting is not due to the trace decay then why does it take place. तो another theory comes into the limelight, कि एक बहुत ही important theory थी जो कि उस टाइम पे limelight में आई, वो ये थी कि जो हमारी forgetting होती है that is due to because of the two things, two kinds of because of the two interference. ठीक है, जब हम लोग कुछ मेमोराइज कर रहे होते हैं तो कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमें इंटरफेयर कर देती है हमारे मेमोरी ट्रेसेस को, है ना. मेमोरी ट्रेसेस जो होते हैं उनको क्रिएट करने में, या हम जब रिकॉल करते हैं तो हमारे मेमोरी ट्रेसेस वापस से नहीं आ पाते हैं, उसकी वजह क्या है, ड्यू टू द इंटरफेरेंस. ओके, सो यहाँ पे स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरफेरेंस कैन बी प्रोएक्टिव. प्रोएक्टिव मीन्स फॉरवर्ड मूविंग, विच मीन्स दैट वॉट यू हैव learned earlier interferes the recall of your subsequent learning. Mean to say students, the new learning affected due to the past learning. So proactive means forward moving, कि new learning affected due to the past learning. If you suppose if you learn French language, ठीक है, and you know English language very well, so if you know English you find it difficult to learn French, तो it means it is because of the proactive interference, कि जो हमारी new learning है it get affected because of our past learning. English की वजह से हम French नहीं सीख पा रहे होते हैं, ठीक है, तो it is because of the proactive interference. The another type of interference is called the retroactive, mean to say backward moving, which refers to difficulty in recalling what you have learned earlier because of learning a new material. So it means you fail to recall your past learning. Now if you learn new things and you are in रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन और इंटरफेरेंस, हम लोग कह सकते हैं कि हम रिकॉलिंग में फेल हो जाते हैं. ठीक है, मीन टू से कि if you cannot recall English equivalent of French words that you are currently memorizing, that it is an example of retroactive inhibition, कि आप अपनी इंग्लिश को जो आपको ऑलरेडी आपको पर आपने जब फ्रेंच लर्न की उसके जो न्यू वर्ड्स लर्न किए उसकी वजह से आप इंग्लिश को लर्न नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे यू आर फेल टू रिकॉल योर past learning. In retroactive and in proactive your new learning get affected due to your past learning. Okay, so this is the interference theory. Now अब यहाँ पे एक another theory भी है कि एक और भी वजह है जिसकी वजह से forgetting जो होती है वो take place होती है. So here we cannot say कि forgetting can occur not only because the memory traces have decayed over a time, or we cannot say कि because independent sets of stored association compete at the time of recall, means to say like interference theory, but there is some another thing is that is the forgetting due to the retrieval failure, because at the time of recall either the retrieval cues are absent or they are inappropriate.
सो रिट्रीवल क्यूज़ क्या होते हैं? रिट्रीवल क्यूज़ आर एड्स विच हेल्प अस इन रिकवरिंग इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द मेमोरी। जो भी हमने पर्टिकुलर लर्निंग या पर्टिकुलर जो भी हमने चीज़ें हमको मेमोराइज करनी है उनसे रिलेटेड जो भी क्यूज़ होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने मैथमेटिक्स के कुछ फार्मूलाज आपने लर्न किए हैं, तो आपने कुछ क्यूज़ बना लिए हैं, कुछ साइंस हैं, कुछ सिम्बल्स हैं। अब अगर वो ही फेल हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉलिंग, सो इट मीन्स यू फेल, आप उस चीज़ को रिकॉल करने में फेल हो जाते हैं एंड दिस इज द फॉरगेटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग उसका एक एग्जांपल भी ले सकते हैं, लाइक यू सपोज यू लर्न और यू मेमोराइज अ लिस्ट ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स लाइक हर्ट, वास्प, कॉटेज, गोल्ड, ब्रॉन्ज, आंट, ठीक है। इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं 6 कैटेगरीज के, डिफरेंट डिफरेंट लाइक प्लेसेस ऑफ लिविंग्स, नेम्स ऑफ इंसेक्ट, टाइप्स ऑफ मेटल। सो अब अगर मैं आपको उनको रिकॉल करने के लिए बोलूँ तो फर्स्ट रिकॉल में आप कुछ कुछ वर्ड्स ही उनको रिकॉल कर पाएंगे, बट अगर सेकेंड रिकॉल मैं आपसे लूँ और मैं आपको बोलूँ, मैं आपके उसके लिए कुछ हिंट्स देती जाऊँ, ठीक है, कि लाइक उस लिस्ट में कुछ मेटल्स के नेम्स भी थे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आप लोग को बहुत ईजी हो जाएगा एंड यू कैन क्विकली रिकॉल दोज वर्ड्स, ठीक है। तो इट मीन्स retrieval cues, due to the retrieval cues, if we get proper retrieval cues we can recall the things properly, but if there is a problem or there is a inappropriate retrieval cues, so we can forget also sometime. Okay students, mean to say there is another heading, is it the enhancing memory. When you study whole thing about the memory and we studied the forgetting also, that what are the reasons behind the forgetting. So here are some enhancing memory also, mean to say there are some things related to the memory, that how you enhance your memory, ठीक है। तो सबसे पहले जो इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज, देयर आर अ नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज फॉर इम्प्रूविंग मेमोरी एंड दीज आर कॉल्ड mnemonics. Okay, the word which you can see in the on the screen is the mnemonics. So some of these mnemonics involve use of images, whereas other emphasize self-induced organization of learned information. So let's study in detail that what is the mnemonics. So there are mnemonics which is related to the images. Okay, mnemonics are the improvement strategies. Okay, so using image require that you create vivid and interacting image of anything and any material you wish to remember. So there are two prominent mnemonic devices. नेटिव जो स्ट्रैटेजीज होती है ना, हम उन्हें निमोनिक डिवाइसेस कहते हैं. सो द फर्स्ट इज द कीवर्ड मेथड. ओके, सो इन द कीवर्ड मेथड सपोज यू वांट टू लर्न एन हिंदी वर्ड, ठीक है. हम इसको एग्जांपल से बेटर समझ सकते हैं फॉर द कीवर्ड मेथड. जैसे कि हमने कोई हिंदी वर्ड है, हमारी मदर टंग हिंदी है और उसी से रिलेटेड कोई वर्ड है इंग्लिश का. जैसे कि हमने वर्ड दिया टमाटर और उसका इंग्लिश वर्ड है टोमेटो, ठीक है. तो टमाटर और टोमेटो साउंड सेम. तो जो सेम साउंड वाले वर्ड्स होते हैं हम उनको उनकी इमेज क्रिएट करके, ठीक है, कि ये टमाटर होता है उसको इंग्लिश में टोमेटो कहते हैं और ये जो टमाटो होता है ये रेड कलर का एक राउंड शेप वेजिटेबल होती है. तो दिस इज़ द कीवर्ड मेथड. टमाटर एंड टोमेटो इज़ अ कीवर्ड मेथड. एक कीवर्ड है टू लर्न द इंग्लिश वर्ड for the of the Hindi word. Okay, so this is a keyword method. The another type of mnemonic device is the method of loci. Okay, so in the method of loci we create a visual image और वी क्रिएट विजुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. वी जिनको कि हम जो आइटम्स हैं जिनको कि हम लर्न करना चाहते हैं हम उनको अरेंज करते हैं, ठीक है, उन ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, और हम उसकी विजुअल इमेज जो होती है उसको हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल लाइक यू वांट टू रिमेंबर ब्रेड, एग्स, टोमेटोज और सोप. सो वेयर यू कैन गेट दीज थिंग्स? इन मार्केट, इन अ ग्रॉसरी शॉप, ठीक है. तो इस तरह से हम उन चीज़ों को विजुअलाइज करके उन इमेजेस को हम लोग ईजिली लर्न कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है. सो दिस इज़ द mnemonics related to the visual images. Okay, another type of mnemonic using that is the mnemonic using the organization. Mnemonics of this kinds are helpful because the framework you create while organization makes the retrieval task fairly easy, ठीक है. You can easily retrieve these
you can easily retrieve these things if you organize the things very quickly. ठीक है, like first जो इसका mnemonic device है that is the chunking. Okay, so chunking means as I told you in the short term memory also, that we noted how chunking can increase the capacity of short term memory. So in chunking we create several smaller units to combine the form of large chunks. ठीक है, हम किसी भी chunks को किसी से बड़ी digit को हम easily चंक्स में, स्मॉल यूनिट्स में पार्ट करके वी कैन ईजिली इन्हांस द कैपेसिटी, और हम बहुत सारी चीज़ों को लर्न भी कर सकते हैं और मेमोराइज भी कर सकते हैं. सो इफ़ यू यूज़ chunking method, you can improve your memory as well. Okay, now the another technique is the first letter technique. So in order to employ the first letter technique, you need to pick up the first letter of each word. So students, mostly ये जो टेक्निक जो होती है ये यूज़ होती है बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए, बहुत सारे जीके को लर्न करने के लिए. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल विब क्योर. So that stands for violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, and these are the colors of a rainbow. So you learn through this first letter technique. आपने सबसे फर्स्ट जो लेटर्स थे वो आपने पिकअप कर लिया और आपने उसको यूज़ कर लिया. सो दीज आर द निमोनिक स्ट्रैटेजीज फॉर मेमोरी इन्हेंसमेंट. दीज आर very simple, but they underestimate the complexity of memory task. So to improve or enhance your memory, the process to the task of memory improvement, there are some another techniques also. ठीक है, जो कि मेमोरी की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको भी ध्यान में रखकर बनाई गई हैं, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं. ठीक है, नाउ द अनदर थिंग इज दैट इज़ द engage in that is the techniques are there are 3 types of techniques. First is engage in deep level processing. Okay, जब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेमोरी टास्क आपको परफॉर्म करने हैं, या फिर आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन आपको लर्न करनी है, या आपको अपनी मेमोरी इंप्रूव करनी है, तो फर्स्ट यू नीड टू engage in deep level of processing. Okay, जैसे कि क्रेक एंड लॉकहार्ट have demonstrated that processing information in terms of meaning that they convey leads to better memory as compared to attending to their surface feature. तो deep processing would involve asking as many questions related to the information as possible. Okay, and considering its meaning and examining its relationship to the facts you already know. So through this through deep level of processing, you can improve or enhance your remembering also. Okay, because you frame your existing knowledge with your past knowledge with your new knowledge. Okay, now the another thing is you can minimize your interference. अभी हमने पढ़ा कि जो forgetting होती है that is due to the interference also in interference theory. Okay, so if we minimize those interferences, okay, so if you want to perform complex tasks, you should try to avoid the interference it as much as possible. Okay, so the maximum interference is caused when they very similar material are learned in a sequence. ठीक है, आपने कोई सेम लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं या सेम चीज़ें आप लर्न कर रहे हैं तो आपको इंटरफेरेंस फील होगा एंड यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेमोराइज दोज थिंग्स. बट if you minimize these interferences, you can easily improve or enhance your memory. The another thing is give yourself enough retrieval cues, because students, retrieval cues are very important to recall the study material. Okay, so when you want to recall your memories, the cues will be easier होने चाहिए to remember compared to the entire content. Okay, और उनका लिंक भी बहुत अच्छा होना चाहिए. ठीक है, जो कि आपने अपने किसी भी टास्क से कंपेयर करते हुए लिखे हैं. जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिया था कि आप कुछ भी लर्न करें, यू कैन कोई भी रिट्रीवल क्यूज़ जो हो सकते हैं आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि उसको इमेजेस में टर्न करना या फिर किसी और चीज़ में. ओके, देयर इज़ अनदर थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इज़ developed, and we can say the another strategy developed by Thomas and Robinson. Okay, उन्होंने क्या strategy दी है for remembering, that is the PQRST method, mean to say preview, question, read, self recitation and test. So preview refers to giving a cursory look at the chapter.
familiarizing oneself with its content. Okay, after that, question means raising questions, seeking answers from the lesson. Okay, and now after the preview and after the question, you need to read. You start reading and look for answers of question you had raised, and after reading, try to rewrite what you have read, and at the end, test how much you have been able to understand. So preview, question, read, self recitation, and test. So these are some mnemonic strategies and some strategies through which you can improve and enhance your memory. So students, thank you for this module.